From my childhood days, I was the kid that who want to always travel and explore the new places. So I am doing the same today. And I reached Nightingale Park as Sarubari in Darjeeling Hills. And the story begins from my home. उस दिन भी नॉर्मल दिन की तरह ही शुरुआत हुआ था। मेरा घड़ी का अलार्म ज़ोरों ज़ोरों से बज रहा था। जब मेरा आँख खुला तो एकदम से धूप खिला हुआ था बाहर। एंड आई थॉट दैट आई विल एक्सप्लोर द नाइटिंगेल पार्क टुडे। After freshen up, I had a great breakfast and had a great view from here. Now it's time to move to Nightingale Park. After climbing 5 kilometers of steep up, I finally reached Singamari. And in the middle of the road, I saw the whole Darjeeling in front of us. So I stopped my bike for a while. And then in a few minutes of ride, I reached Darjeeling. And when I reached the Darjeeling Mall, I saw the St. Andrew Church from the roadside from where I was standing, and the view and the church was just awesome. And from there, it took 5 minutes of drive to reach the Nightingale Park. And then after that, I entered the shrubbery park finally. And when I entered the park, it was so nice that it was fully covered with the flowers.
Slowly, I started to explore the Nightingale Park. There was a small temple situated in the top of the park. It was a foggy day, so I couldn't capture Kanchenjunga ranges from here. सो गाइस अभी हम लोग इधर नाइटिंगेल पार्क आए थे, तो नाइटिंगेल का तो आप लोगों ने व्यू वगैरह एंजॉय कर ही लिया होगा। और इधर का वाइब्स एकदम ही बढ़िया आ रहा है, एकदम पीसफुल एरिया है। इतना होल दार्जिलिंग इतना क्राउडेड हो गया है। हाँ, इधर भी क्राउड तो है पर इतना ज़्यादा नहीं है और एकदम पीसफुल एरिया है। आप लोग भी इधर आना चाहते हैं, दार्जिलिंग में है तो आ सकते हैं। Good guys, enjoy the view. And the boys were playing badminton and the girls were dancing all over there. And I don't know what the aunties were also dancing over there. After coming here, the vibes are very different and I'm feeling like very positive vibes are coming from here, because everybody is like happy over here. Everybody's smiling faces are making my day a great day. तो गाइस ये वाला पार्क काफ़ी बड़ा है यार। घूमते घूमते थक गया है, नीचे तक चलने का रास्ता वगैरह। इधर ऊपर तो आपका पूरा फूल वगैरह का ब्यूटी देख सकते हैं आप। नीचे के साइड में इतना वो तो नहीं है, मतलब फूल वगैरह इतना सीनिक ब्यूटी तो नहीं है, तो फिर भी इधर आप जंगल का मज़ा ले सकते हैं। इधर आप लोग सुन सकते हैं, देयर आर नो नॉइजेस
There are no any noises beside only the chirping of the birds over here. सो गाइस फाइनली अभी हम लोग ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। तो अभी इधर से एग्जिट लेना है। तो नाइटिंगेल पार्क का तो व्यू इतना ही देखा, इतना ही था। सो थोड़ा सा छोटा सा एक ट्रेल था नीचे तक, एक राउंड मार के हम लोग आ गया। एक राउंड मार के मैं आ गया वापस। So guys, I found something unique over here. Like ये आपका गार्बेज वो करने वाला गाड़ी बनाया है इधर नाइटिंगेल पार्क। ये जितना भी है अंदर तक सब यही चलता है। सो अच्छा है, अच्छा बनाया है, अच्छा है। तो अभी इधर इतना अच्छा क्लीन ग्रीन है तो हम लोगों को भी अभी समझना चाहिए, हम लोगों को भी इधर उधर ट्रैश नहीं फैलना चाहिए। मैंने अभी तक तो नहीं देखा इधर उधर क्लीनिंग वगैरह अच्छा से किया है, और आगे से भी नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ। तो अभी हम लोग एग्जिट गेट के उधर पहुँच गए। Guys, it is the end of this episode of Nightingale Park, but not the end of this story. So stay tuned for upcoming videos. Do like, share and subscribe. And for more videos like this, keep watching.